सो गाइस क्लींजिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं टॉनिंग। प्रॉपरली क्लीन फेस है हमारी ब्राइड का। तो उसके बाद हम यूज करने जा रहे हैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर काफी अच्छे से करना जरूरी है। फेस भी हमारा अच्छा स्मूथ रहता है, काफी ड्यूरेशन बढ़ती है हमारे फेस की। तो मुझे कहीं हीट लगे तो मैं हैंड्स का यूज करूंगी, लेकिन मेक श्योर कि जो हैंड्स है आपके वो प्रॉपरली सैनिटाइज हो। कवरिंग द ईयर पॉइंट ऑल्सो, ईयर को भी कवर करेंगे। ये मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट में से ये लाइटर कलर प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद थोड़े पतले वाले ब्रश से हम उठाएंगे ब्राउन कलर। इन कलर से मैं थोड़ा इन्वर्ट करूंगी इस लाइन के पास। इन्फिनिटी एचडी आई शेडो बुक में से मैंने ये उठाया है, एक पीची कलर फ्लैमिंगो। ग्रीन कलर लेके जहाँ पे दोनों का मिक्सिंग पॉइंट है मैं वहाँ पे कर दूंगी ब्लैक। अगर आपको लगे कि क्लाइंट की आंखों में पानी आ रहा है, वाटरिंग और यहाँ आ रही है हमारे क्लाइंट की, तो हम हल्का सा कर देंगे, हल्का सा क्यूटिप की हेल्प से कर देंगे क्लीन। चाहिए इस वाले
फॉर प्राइमर लिया मैंने फ्रॉम क्रॉस ब्यूटी से नॉट टू फॉर This is rose pink and this is soft pink. For our 52 का स्पॉटलाइट सेटिंग स्प्रे अभी मैं ले लूँ पैक का 103 ब्रश और ब्राउन कलर लेके हम करने जा रहे हैं कंटूर। अभी मैं करने जा रही हूँ आईब्रो डिफाइनिंग। लाइन करेंगे अच्छे से लिप्स को। लिप्स को करने जा रहे हैं मॉइस्चराइज।
पेस्ट टाइप करूँ।